If you guys know which car is this, comment down. यार रोड इतना मस्त है ना, 120 पे 100 120 पे जा रहा है, फिर भी इट डजंट मैटर। आई मीन पता ही नहीं चल रहा है मुझे कि आई एम गोइंग एट 100 120, जस्ट क्रूजिंग स्मूथली। एंड दिस बाइक हिमालयन, नो डाउट अबाउट इट, it's awesome man. 90 kilometers we have traveled from Bangalore. So I started at around 6 a.m. and now it's 10 a.m. So 4 hours में 290 kilometers, not bad. Let's see how many kilometers to go. Right. How many years you're in India? Yeah, 13. And you're from? Germany and Spain. Wow. Nice. Germany and Spain. Raúl, a Spanish name. Yeah. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today is Friday 8th of October और अभी सुबह के बजे है 5:50. The plan was to start by 5 a.m. but you can see right, this rain, पूरी रात बारिश हो रही है and that's why I delayed by 1 hour. तो 6 बजे निकलूँगा मैं और देखूँगा how it goes. अभी तो मैंने रेन गियर डाल दिया है, राइडिंग गियर के ऊपर रेन गियर डाल दिया है and my bike is also ready. टैंक बैग उसके ऊपर मैं रेन कवर डाल दूँगा, टेल बैग रेन cover already there, panniers which don't need the rain cover, so all set. So the distance to cover for today is 540, नहीं यहाँ से जाता है, ये coastal route अलग है. The distance to cover is around 500 kilometers and it will take 10 hours with breaks and maybe 11 to 12 hours. So let's see how it goes. अभी तो मैं फ़िलहाल I'll start by 6 and I'll see you on the road once the rain stops because I can't use the GoPro in the rain. Okay, so the time is right now 7:45 a.m. and today is Friday 8th of October 2021 और टाइटल से तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा. आई एम ऑन माई वे टू गोकर्णा. लॉन्ग प्लान डेस्टिनेशन was not able to make it due to lot of reasons. One of the major reason was COVID, but this time कर लिया प्लान और बोल दिया चलो मीन्स चलो. सो आई टुक ए लीव ऑन फ्राइडे, सैटरडे संडे को क्लब करके, तो 3 दिन का प्लान है मेरा. इस 3 दिन तो जस्ट पार्ट 1 है. So there are like Gokarna is a very, I mean it's a very big place, lot of places, lot of things to do in Gokarna, and I wanted to divide this Gokarna series into 3 parts. First part which I am doing now in this trip on in this 3 days, which is all about beaches. The second part is other than beaches, like temples, what is the history of Gokarna from a religious standpoint. Part 3 होगा इसका places around Gokarna. So there are various beautiful places around Gokarna that I will take you through. So I will try to club my part 2 and part 3 when I go next time. I want to catch the sunset. I don't want to miss the sunset in Gokarna. So that's why I decided that I will start. And good decision. तो कल मैं गया था लालबाग राइनॉक्स डीलर के पास and I bought myself riding jacket and a riding pant, level 2 armor. I will give you the review of that once I come back because अभी just first time मैंने पहना है, तो I will use it for like couple of days, 3 days, and then I will give you the review of that. तो उसके साथ मैंने एक अच्छा काम किया, H2OG ले लिया, जो रेन जैकेट है ये पहना है मैंने, ये वाला, एंड द रेन पैंट्स विच आई एम वेयरिंग. तो ये दो चीज़ें लेके मैंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि I could start my bike in the rain and I
I think I crossed 100 kilometers in rain because टुमकुर कुछ 60-70 किलोमीटर्स था, उसके बाद भी बारिश हो रही थी आधे एक घंटे तक. तो I think I started at 6, तो 1.5 hours I was riding completely in rain. और मेरी बाइक की पूरी वाट लग गई है, पूरा चिखल हो गया है. बट दैट्स फाइन, वो तो वॉश हो जाएगा. बट मज़ा आ गया यार, बहुत मज़ा आ गया. बारिश में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है यार. और ये देखो मेरे आगे विंटेज कार जा रही है, वो ट्रक लेके जा रहा है उसको. चलो देखते हैं कौन सी कार रही है. ब्यूटीफुल. If you guys know which car is this, comment down. तो अभी चित्रदुर्गा क्रॉस करूँगा मैं. चित्रदुर्गा क्रॉस करके या पहले अगर भूख लग गई तो आई एम गोना हैव माई ब्रेकफास्ट विच आई हैव कैरीड फ्रॉम होम. सो या आई एम फॉलोइंग COVID. I am following all the precautions. I am taking all the precautions with respect to COVID-19. I am carrying my set of masks. I am carrying sanitizers. I am carrying as disinfectant spray. And I am also carrying my breakfast, which is thepla, and I am carrying mixed fruit jam. I also have some protein bars, some peanuts, एंड डार्क चॉकलेट्स विच आई लव. तो ये सब मैं कैरी कर रहा हूँ. आई डोंट थिंक मुझे कहीं रुकने की ज़रूरत है. पानी भी है मेरे पास. तो माई आइडिया इज़ टू गो नॉन स्टॉप. आई मीन नॉन स्टॉप मीन्स नॉट टू स्टॉप एट एनी होटल्स और एनीथिंग. नो इंटरेक्शंस विद एनी वन. जस्ट गो स्ट्रेट टू माई होटल, check in there, catch the sunset. तो let us see how it goes. अभी तो फ़िलहाल cruising at 80 to 100 on National Highway 4, Bangalore Pune Mumbai highway. Chitradurga is showing 77 kilometers. Look at the sky. Sunrise नहीं मिला यार आज मुझे because of this cloudy weather. पूरा overcast. यार रोड इतना मस्त है ना. 120 पे 120 पे जा रहा है, फिर भी इट डजंट मैटर. आई मीन पता ही नहीं चल रहा है मुझे कि आई एम गोइंग एट 100 120, जस्ट क्रूजिंग स्मूथली. एंड दिस बाइक हिमालयन, नो डाउट अबाउट इट. इट्स ऑसम मैन. अभी आधा टैंक नहीं हुआ है मेरा. आधा टैंक होने के बाद ही मैं पेट्रोल भरूंगा. शेल पेट्रोल पंप आया है बट आई विल नॉट गो हियर. मैंने तो पावर पेट्रोल फिल किया था, पावर पेट्रोल शेल का. मज़ा आ रहा है लेकिन यार बाइक राइड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. तो अभी तो ये हाईवे है. आई विल जस्ट कीप राइडिंग, कीप गोइंग, क्रॉस चित्रदुर्गा, एंड आई विल स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट ऑन द रोड समवेयर. एक अच्छा जगह देख के साइड में, आइसोलेटेड प्लेस, एंड दैट टाइम आई विल कनेक्ट बैक विद यू गाइस. I think this is a new bypass. I'm going Gokarna. Gokarna. You? Goa. I think this is new bypass, right? Davangere. You have to go down, huh? So the time is 10 AM. और देखते हैं कि हम लोग कितने किलोमीटर आए हैं. ओह माय गॉड, अप्रॉक्सीमेटली 290 किलोमीटर्स वी हैव ट्रैवल्ड. 290 किलोमीटर्स
290 kilometers we have traveled from Bangalore. So I started at around 6 a.m. and now it's 10 a.m. So 4 hours में 290 kilometers, not bad. Let's see how many kilometers to go. 211 kilometers to go, showing 4.5 hours. तो अभी मैं आधे घंटे का ब्रेक लूँगा. ब्रेकफास्ट अभी कर रहा हूँ मैं 10 बजे. आई विल हैव माई थेपलास एंड जैम और खा के निकल जाऊँगा 10:30 बजे. सो आई थिंक if I am not wrong, if I go non-stop, I should be in Gokarna for lunch. Let's see. Awesome. Okay. So, वो बोर्ड आ गया है. डाइवर्जन, वी हैव टू टेक लेफ्ट टुवर्ड्स सिरसी, 71 किलोमीटर्स, एंड आई थिंक अनदर 70 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर इज़ गोकर्णा. तो आई डोंट नो अबाउट दिस रोड कंडीशन, बट आई एम गोना ट्राई दिस नाउ बिकॉज दिस इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू गोकर्णा. एक और रूट है वो शिवमोगा से जाता है और एक और रूट है वो आगे से जाता है, बट आई दिस इज़ द मिडल रूट एंड द फास्टेस्ट वन, द शॉर्टेस्ट वन. सो आई एम गोना ट्राई दिस एंड सी. आने के टाइम देखेंगे कहीं और से आ सकते हैं क्या, शिवमोगा थ्रू एंड ऑल दैट, डिपेंडिंग ऑन द टाइम एक्सेट्रा. सो लेट्स टेक अ लेफ्ट एंड गो टू सिरसी नाउ. So guys, you can see the road. I have crossed Sirsi and I'm just 80 kilometers away from Gokarna. और ये रोड की हालत देखो. तो definitely I will not recommend this road for you guys. If you want to come from Bangalore, please do not come via Sirsi. जाने के टाइम मैं कोई दूसरा रोड लेने वाला हूँ. For example, I think शिवमोगा का रोड, Shimoga via Sakleshpur, all those inside roads, I'm gonna take that. Maybe it will take some more time, but I think road तो अच्छा रहेगा at least. मैंने ना बहुत पहले पेपर में पढ़ा था, I don't remember when, that Haveri Sirsi road to be constructed. Bloody, it's so many years now and COVID भी होके चला गया, फिर भी इन लोगों को टाइम नहीं मिला रोड कंस्ट्रक्ट करने को. I don't understand that really यार. Horrible. Anyways, I am expecting at least a beautiful ghat. I don't know which ghat I will get to come down to Gokarna. So road अच्छा हो गया यार. तो 10 to 15 minutes I think. Yeah, देख लो रोड अच्छा हो गया. तो yeah, if you, I mean, I don't know what is in store for me next. आगे जो बचे हुए 70-75 kilometers, I'll keep you posted. If suddenly becomes very good or if suddenly becomes bad, I'll capture that again. Okay, so the time is 1:30 p.m. and I'm in the ghat now. Another 50 odd kilometers to go to reach Gokarna, and I thought of just taking a break here, water break, and just capturing this beautiful nature and the sound. Just listen carefully. So much peace. No one else, just me and my bike. Okay, so I'll see you back on the road. Let me take some pictures for my Instagram and I'll see you on the road.
5 p.m. right now, and I reached this Namaste Yoga Farm at around 3 p.m. Beautiful resort. Peace, nothing but peace, bird sounds, cold weather. It's beautiful. I'll give you a room tour and the entire resort tour in a while. But before that, let me tell you something very important. There is no parking in this resort here down. There is parking on the top of the resort. There is a restaurant known as Namaste Sanjeevani. There you need to park your cars or bikes, and then from there you have to climb all the way down. तो बाइक के दो पैनियर्स, ये बैग वो सब लेते इवन दो ही वॉज देयर टू हेल्प मी, बट आधा वर्कआउट तो इधर ही हो गया आज का मेरा. तो बट या आई टुक रेस्ट, कपल ऑफ आवर्स, नाइस रेस्ट. अभी मैं फ्रेश हूँ. अभी मैं थोड़ा सा कैफीन ले रहा हूँ सो दैट आई कैन गो टू दी Kudle Beach. Kudle Beach is just 5 minutes walking distance from here down. So let me give you a room tour. So this is a kind of cottage. Double bed. Please don't mind the mess क्योंकि मेरे panniers, bags सब ऐसे ही पड़े हुए हैं. Then there is a tea making, ये heater है, and the washroom of course. छोटा सा रूम है, वेरी नाइस. बाहर सिटिंग अरेंजमेंट है, यू कैन सिट. फ्रेंड्स आएंगे, कपल आएंगे तो यू कैन सिट एंड एन्जॉय इन द नाइट. यू कैन हैव ड्रिंक्स, यू कैन हैव dinner, everything. So another important thing is this resort does not have room service. So you will have to go to that Cafe Sanjeevani and you will have to have your dinner etc. अगर रूम में लाना चाहते हो तो you will have to get parcel and then you can bring it here and eat it, have drinks and enjoy with friends, family, couple, whatever. तो आज का प्लान है अभी. I'll go to the Kudle Beach. I'll capture the sunset if it's not overcast. Let's see. And then I'll have my dinner while coming. And then देखते हैं कैसा होता है प्लान. Let's see how it goes. So आज का दिन में तो इतना ही एक्साइटमेंट है. Tomorrow there will be a lot of excitement because tomorrow we are going for a trek. मज़ा आ गया. Caffeine is required now. बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही थी because I came non-stop from Bangalore. I just took a stop for breakfast थेपला खाने के लिए. उसके बाद मैं जैसे निकला ना 10:30 बजे, I did not stop anywhere except for petrol and water break. Direct मैं यहाँ पे आया 3 बजे. So it was quite a ride. आज रात को मस्त नींद आएगी. फिश खा के मस्त तगड़ा सो जाने का. थोड़ा रेडी होके I'll see you while going to the Kudle Beach. Cheers. Okay, so the time is 5:30 and मैं मेरे रूम से निकल रहा हूँ. I'm going towards Kudle Beach. So let me show you the route. This is the beautiful Namaste Yoga Farm. यहाँ पे 2 डॉग्स भी है. This is the reception. Yeah, I know. No, I also have dogs, so I know. Yeah, I understand. Tu, tonta. What the- What She's you the doing? first one. She's the oldest Yeah. one. She's the oldest dog in You book by never now. did this before. What are the names? She's Trouble. Okay. I'm Flash Goldie. 2 brothers. Oh, good. So you're Oliver. Yeah. I'm Rahul. Oh, Rahul. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Nice to meet you too. Awesome. How was the trip coming? Was good? Yeah, it was very good. I came non-stop. It was raining in Bangalore when I Oh. started, but by the time I crossed up for a couple of hours, it stopped raining. So now it's pleasant climate. Awesome. I'm also happy. I think monsoon stopped now. Yeah. Oh, at least this is the last, you know,
the last weeks. Good. And once we know the monsoon is gone, everything has to be painted outside. Right, yeah. I wanted to talk to you about this farm because I am like a YouTuber. So tomorrow maybe I'll catch up with you whenever you are free. Oh, so we yeah, can. yeah, yeah. I make this kind of documentaries and videos and kind of stuff. You Yeah. have this 360 degrees. Yeah. Right? 360 degree. Yeah. Goes- Yeah. It Yeah. makes 360 degree photos, right? Yeah. Yeah, it's not cheap, this thing. This one is. Or is it just a gimbal? Yeah, this is just a gimbal, but that one also I have 360. Yeah. Because the people from Google actually have been here. Uh-huh. And I paid quite some money. Right. Now, right. when you go to my website, you see you can walk into the gate. Yeah. You Yeah. can walk Virtual into tour. each room. Yeah. We walk into each room, walk to the property. Even they've been up in the tree house. Yeah. They walk down to the yoga place, and then there's always errors, no, where Right, you can right. press and go walking. Nice, And I would nice. like them to come back because Cottage 1 is now completely, and Cottage 2 and Cottage 3 is completely renovated. Oh wow, good, Right? good. Looks much better. Yeah, we can take some videos and put it on YouTube. Yeah. Awesome. Cool. I'll catch up with you Thank you, tomorrow. Rahul, huh? Thank you. I see you tomorrow. Sure, Show you sure. eating. You stay here? You stay here? Yeah, we are on property all the time. Great. We stay in one of the cottages back. The cottages, they are still closed. Okay, In a monsoon always. okay. But I live in there. We put the roof Oh. material in one. Wow, And yeah, that's right. How many years you're in India? we are 13. And you're from? Germany and Spain. Wow, nice. Germany and Spain. Raúl, a Spanish name. Ah, yeah. Full- So after meeting this beautiful German and Spanish couple, I'm going to Kudlai Beach, on the way to Kudlai Beach. So सनसेट देखेंगे, खाना खाएंगे, वापस आके आराम करेंगे. लेट्स सी. गेट है यहाँ पे. Pull inside. Okay. My God, quite a trek. Oh, Kudlai Beach is this side. Okay. So this is the Namaste Yoga farm, and from here you need to take a left, go to Kudlai Beach. Look at this road, yaar. So much peace. I can hear the sea sound. So beautiful it is here. Superb. I remember my trekking days. Almost there, Kudlai Beach. Beautiful Kudlai Beach. Beautiful. Look at the sky.
beautiful view at Kudle Beach. ओके सो अपना सनसेट हो गया है कुडले बीच, ब्यूटीफुल बीच। तो अभी मैं जाऊंगा डिनर करके आराम करूंगा, सो जाऊंगा बिकॉज टुमारो इज़ अ बिग डे फॉर मी। आई नीड टू गो फॉर ए बिग ट्रैक। ओके सो आई विल गो अप बाय दैट रोड टू माय योगा फॉर्म और देखता हूँ डिनर कुछ खुला है तो डिनर करके चला जाऊँगा। आई विल सी यू एट द डिनर। एकदम झकास डिनर हो गया है। 1 कॉस्मोपॉलिटन कॉकटेल, पनीर पकौड़ा एंड दाल राइस। टाइम इज़ 7:35। द प्लान इज़ टू डू एडिटिंग। तो लैपटॉप मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आई एम गोना ट्रांसफ़र ऑल माई फुटेजेस फ्रॉम Osmo Pocket, GoPro, mobile, everything what I've taken, and I'm gonna edit this vlog. Please go and watch this vlog. If you like the video, please hit the like button. If you have not subscribed, please subscribe to my YouTube channel Rahul in Wonderland. Take care, be safe, and keep smiling.